4 बजे एग्जैक्ट वापस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जाने से पहले आपको जो कार्ड दिए जाएंगे वो ज़रूर उसको पेश करके जाइएगा। 4 बजे तक वापस आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप पहले भी जा सकते हैं अगर आप पहले खत्म करते हैं। It's now from 4 o'clock till 5 o'clock. 5 we have a break for tea and prayer, and then at 5:30 we'll start the final session of the day, and we'll definitely be finished by 6:30, maybe a bit early. In this session we're going to focus on the delivery chain, but before I come to that, we just want to summarize what you told us about what you want from the education department. So if I can have your attention, please. So we want to summarize what we learned from you about the requests you have for the education department. I'm going to ask Simon, Ray and Saad together to summarize what you told us. Thank you, Michael. So you remember that we asked you on your way out if you could record on cards specific support that you wanted from the education department to help you achieve the work that you needed to do in order to try and overcome the challenges and reframe the role as we've developed in the visions around the room. Some really good cards up there, lots of really good ideas. We've just grouped them together and there were 6 significant themes emerging. I'll just run through those 6 points and then Saad will be able to provide that commentary in Urdu as well. Firstly, training. You said it's very important to get support from the education department to help you with training. Secondly, you needed help from them to resolve the issues around teacher shortages, and that was very important. Thirdly, and a big set of cards in the middle, in fact probably the most significant point, political interference. You wanted support from the education department to deal with that one. Fourthly, practical issue around transport. You said we needed help from the education department to resolve the issue around lack of vehicles so that you and particularly your teams, the assistant education officers, could get out to their schools, importantly. Fifthly, another practical support. You wanted help with office space for your teams and also communications devices, batteries and so on, so that your teams could communicate together. And finally, fifthly, it's 5 points, that actually the role of the EDO as defined in the delivery chain should be clearer, and in particular the relationship with the DCO needed some work and you needed some help on that from the education department. And that final point is what we're going to move on to thinking about in a few minutes, the delivery chain and how that will help you. So, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं और हम इनको ज़रूर एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि आपकी मदद करेंगे कि किस तरह इनका हल ढूंढा जा सकता है। तो आइडियाज़ बहुत सारे अच्छे हैं। हमने देखा कि 6 बड़े बड़े एरियाज़ में ये आइडियाज़ आते हैं और वो मैं आपको रिपीट करता हूँ। तो पहला सबसे जो हमने देखा कि बहुत से लोगों ने कहा कि उनको ट्रेनिंग चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए पर अपने बाकी स्टाफ के लिए। तो इसमें हेड टीचर्स आ जाते हैं, AEOs आ जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा जो आपने कहा वो ये है कि टीचरों की शॉर्टेज है, वेकेंट पोस्ट जो है वो फिल नहीं होती और आपको जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ भी टीचरों की ज़रूरत है जो पूरी नहीं होती। तीसरा जो आपने कहा वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी मदद करेंगे। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन, AEOs की ट्रांसपोर्टेशन और ऑफिसर्स की ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वो फील्ड विजिट्स कर पाएँ जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस किया जाएगा। पांचवा ये है कि आपको अलग अलग एरियाज में सपोर्ट की ज़रूरत है कि जैसे ऑफिसेस, कुछ ऑफिशियल्स के पास ऑफिसेस नहीं है, कहीं कंप्यूटर्स या टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, तो अलग अलग सपोर्ट एरियाज जो कि आपको अपने फंक्शन में मदद करेंगे। और आखिरी जो इशू था वो ये था कि EDO का रोल डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, EDO किसको रिपोर्ट करेगा, EDO की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लीगली EDO क्या क्या एक्शन ले सकता है और क्या नहीं ले सकता, उसकी आपको एक सही तरह से एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन चाहिए थी।
तो ये छठा इशू जो है इसको हम अभी इस नेक्स्ट सेक्शन में एड्रेस करेंगे, बाकी जो है उनको हम आइंदा इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे. तो ओवर टू यू माइकल. Thank you, Saad. I just want to comment on this agenda because in order to implement the roadmap, the Secretary of Schools and the Department and the Chief Minister need to understand the problems, the real practical problems that you face every day. So this is very useful information. And each month when the Secretary and I and others meet the Chief Minister, we raise these problems. So for example, on political interference, I don't pretend that the problem is solved, but already there's a change in the way EDOs are appointed. You know that. In the last 2 weeks, the Chief Minister approved a new policy on teacher transfers, so they won't happen on political grounds after the end of July. So a new policy was agreed by the Chief Minister 2 weeks ago. So I just wanted to give you these examples of how we're responding. Similarly, on the questions you're raising about transportation and vehicles, on Tuesday, 2 days ago, Monday, we raised with the Chief Secretary the importance of getting better vehicles, as you are asking for some of the staff who work in your offices. And the Chief Secretary asked the Secretary of Schools to talk to the Secretary of Finance about making sure the money is found to solve that problem. So as the roadmap is implemented, we want to help you solve the problems that get in the way of you doing the job you want to do. Similarly, I'm hearing that you want to focus on education, not be distracted by other things to do. Already we've raised that issue with the Chief Minister, and we will raise it again tomorrow when we see him privately while he's here. So I'm not saying we can solve all the problems. I am saying we're working on them. Ali, would you just like to summarise? Thank you. सॉरी, माइकल ये कह रहे हैं कि आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए. उसकी वजह ये है कि माइकल हर महीने सीएम साहब से पर्सनली मिलते हैं और ये इश्यूज उठाते हैं. इनमें से बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो माइकल ऑलरेडी सीएम से उठा चुके हैं और उस पर अमल भी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा अब EDOs की अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी के थ्रू होती है. ये एक ऐसा काम है जो पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के थ्रू होता था, उसके लिए एक सर्च कमेटी बना दी गई है. इसी तरह टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 2 हफ्ते पहले चीफ मिनिस्टर ने माइकल की एडवाइस पे एक पॉलिसी नई डिजाइन की है जो 30 जुलाई के बाद इफेक्टिव होगी और उसके बाद उम्मीद है कि टीचर्स की जो ट्रांसफर है वो भी मेरिट पे होगी. इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का आपने मसला उठाया. वो मसला हमने 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके उनको ये बात बताई कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है जिसकी वजह से सुपरवाइजेशन नहीं हो सकती. चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी स्कूल को कहा कि वो सेक्रेटरी फाइनेंस से बात करें और ये इंश्योर करें कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फंड अवेलेबल है. तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि सारे मसाइल एकदम हल हो सके, लेकिन आप लोगों की इनपुट से हम रेलिवेंट अथॉरिटीज को ये सारे मसाइल पहुँचा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है. Thank you. We will now just move on to the next section, which is about the delivery chain. If you look on the screen, and this is also a slide in your book. It's slide 36 in your handbook. The delivery chain is a really important part of making something happen, of delivering a result. Ali, I'd like you just to translate the 2 bullet points into Urdu, just to make this really clear and strong. डिलीवरी चेन एक कॉन्सेप्ट है. इसकी टेक्निकल डेफिनेशन तो आप स्लाइड्स पे दे सकते हैं, लेकिन मैं आसान अल्फाज में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. डिलीवरी चेन बेसिकली
नाम है अफराद का और उनके बाहमी ताल्लुकात का, जिसके जरिए वो सिस्टम को चलाते हैं। डिलीवरी चेन एक बुनियादी सवाल का जवाब देता है, और वो बुनियादी सवाल ये है कि अगर टॉप लेवल पे जो लीडर है उसके जहन में एक इंटेंशन है, उसको अगर हमने अमली जामा ऑन द ग्राउंड पहनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से लोग दरकार हैं और उन लोगों को क्या क्या काम सर अंजाम देने होंगे। इस सवाल का जवाब ये डिलीवरी चेन का कॉन्सेप्ट देते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा मॉड्यूल मबनी है, और इसमें हम एक्टिविटीज भी करेंगे कि समझने के लिए कि डिलीवरी चेन का कॉन्सेप्ट है क्या। लेकिन आसान अल्फाज में डिलीवरी चेन और कुछ भी नहीं है, ये नाम है इंसानों का, अफराद का जो सिस्टम में होते हैं और उनके बाकी ताल्लुक का और उनके आपस की कोऑर्डिनेशन का, जिसके जरिए वो सिस्टम को चलाते हैं। Thank you. So, can I have the next slide, please? So, 10 years ago, I was responsible in England for the national literacy and numeracy strategy, improving standards of reading, writing and maths in all of England's schools. So, when I think about how do I make that work, in the end, I want the school pupils, the children, to learn more maths, to learn to read better, to learn to write better. I'm here. So how do I, sitting in here, make 7 million children read better? I can't do it on my own. I need a delivery chain. Inside the school, there are teachers. The teachers, if they do the right thing, they will influence what happens, how well the children learn. So I need to influence the teachers in the schools. To do that, I need to influence the local authorities, which are like your districts, like the districts in Punjab. There's 150 or 180 of those. Then I need some people focus purely on literacy and numeracy, the national strategy, and finally, I'm here and I answer to the minister. So you see the delivery chain. I have to influence all these relationships so that children will learn better. Very often in governments all over the world, people here announce policies, write laws, publish reports, plans, papers, they brief the newspapers, all talk. Without a delivery chain, nothing happens. So the delivery chain is absolutely vital part of getting something to happen. Can I have the next slide, please? Here's another delivery chain, this time from Punjab. And in the briefing we gave you, district, for each of the targets, we tried to draw the delivery chain. This one is about student achievement. And you see in green the main links in that delivery chain. The Chief Minister wants students to achieve more. He influences the secondary schools. He influences you, the district officers. You influence the DEOs, the deputy DEOs, the assistant, the AEOs, and they influence the teachers. The head teacher maybe also influences the teachers, and then the students learn more. So you see the idea is to connect what you do in the centre of a system